हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 में he says that equilibrium constant for reaction is shown here. Arrow is missing. What is the number of moles of hydrogen iodide in equilibrium with 2 mole of hydrogen and 0.3 mole of iodine? At equilibrium, okay, what is the number of mole of hydrogen iodide in equilibrium with 2 mole? अच्छा Kc गिवन है तो ये तो सही है, तो आप सिर्फ एक्सप्रेशन लिखो पहले सबसे। Kc का एक्सप्रेशन क्या है? तो एक्सप्रेशन फॉर Kc इज, ये इस तरह से है ना, एच आई थोड़ा स्क्वायर शायद जो प्रिंटिंग का मिस्टेक होएगा। प्रोडक्ट होगा। हाँ जी, जो प्रोडक्ट है उसका स्क्वायर लेना है क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स 2 गिवन है, एंड देन यू हैव टू टेक H2 here, and then you have to take I2 here. Now Kc value is given as 60, and for this is what is the number of moles of hydrogen iodide? So remember that this is the concentration. Just I'm taking it as x square over hydrogen is the number of moles as 2. ये equilibrium पर ही given है, and 0.3 moles of this one. So you can take it onto this side, so that you can have x square is equal to 60 into 2 times 0.3. So I think the answer will be 36, and x will be equal to 6. So 6 mole per decimeter आंसर cube. 6। हाँ जी, 6 mole per decimeter cube is the concentration. This is what is the number of moles of hydrogen iodide. So what is the number of moles? Um, कह रहे हैं अब हम इसको ऑप्शन को 1 ले लेते हैं by assuming that everyone is using same volume 1 mole per decimeter cube. So जी, that's why 0.6. Sorry, 6 is the right answer. Got it or not? गॉट इट सर। Then he says that question number 4, hydrogen and carbon dioxide are mixed in equal molar amount at 800 Kelvin. A reversible reaction takes place. Hydrogen reacts with oxygen to produce water and carbon monoxide. Pressure जो है ना वो है 10 kilopascal. Kp value is already given. What ये is the सिर्फ रिएक्टेंट्स partial का pressure? पार्शियल प्रेशर दिया है, प्रोडक्ट हाँ, नहीं पता। अब ये देखो Kp का एक्सप्रेशन सबसे पहले तो आप लिख लें कि Kp is partial pressure due to CO, and because here water is also a gas. अगर गैस ना होता तो फिर आप ना लिखते, लेकिन फिलहाल अभी लिखना है partial pressure due to H2O divided by partial pressure due to H2 times partial pressure due to CO2. अब K Pa की वैल्यू गिवन है, that is 10,000. अच्छा, H2 और CO2 की वैल्यू उसने गिवन है, that is 10 kilopascal. That's fine. Kpa is given as 0.288. Okay, so okay, that's fine. अब आपने यहाँ पर एक assumption यूज़ करनी है, and it is that because you are having H2 plus CO2, and you are having H2O here and CO over here, so whatever is the partial pressure due to CO, it is same as because of water as well, because both of them have same number of moles. Because whatever amount of H2CO2 will form, if x moles of CO2 is going to form, x mole of H2O will also form. So therefore, now just write down the value of Kp, which is 0.288. 288। Partial pressure due to carbon monoxide, it is, let's say, x. Partial pressure due to H2O, because of having same number of moles in the same container having same volume, it is x as well. Now partial pressure due to hydrogen gas, it is um, 10 So CO and kilopascal. H2O will have the same partial pressure. Yes, exactly. देखो उसका रीज़न समझ लो ना, वो इसलिए क्योंकि एक ही कंटेनर में है, एक कंटेनर में वो सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, एवरी गैस इज ऑक्यूपाइंग होल मोल्स भी वॉल्यूम, सेम है। so their number of moles being produced are same. अब आप कह सकते हैं कि इसी वजह से H2CO2 का भी सेम है, मैं कहूँगा नहीं, वो इस वजह से सेम नहीं है. They might have used same amount of hydrogen and carbon dioxide initially, तभी बिकॉज उसके 1:1 मोल रेशियो है, तो एंड पे भी उनके सेम नंबर ऑफ मोल्स हैं. तो अब आपके पास
just remember one more thing, because you are using here 10 kilopascal. So your whatever your answer is going to come, it should also be in kilopascal. So this is 100. So you write down 100 times 0.288 is equal to x square, and x square is equal to 28.8, and x is equal to 5.16. 5.366 is Yeah, the answer. yeah. So A will be the right answer. Is it clear? Okay, it's clear now. Then look at question number 7. He says when a sample of Hi is warmed to a particular temperature at an equilibrium below is established, a temperature at this temperature it is found that partial pressure is 28 times the partial pressure of H2. Okay, so just write it down here that partial pressure due to Hi is 28 times the partial pressure of H2. That's fine. अब इसका ये भी मतलब है, because according to balanced chemical equation, if 1 mole of hydrogen gas is formed, 1 mole of iodine is also formed. If number of moles of H2 is x, number of moles of I2 will also be x. So he says what is the value of Kp at this temperature? तो बड़ा आसान है, तो हम ये कह देते हैं कि P partial pressure due to H2 जो है ना, sorry, partial pressure due to H2 it is equal to x. Partial pressure due to I2, because of having same number of moles, it is x. And partial pressure due to Hi, that 28x. that means, yeah, exactly, it is 28x. तो because Kp में हम moles यूज़ नहीं करते बल्कि partial pressure यूज़ करते हैं. So first of all we write down the moles. uh, its expression will be like this one: pH2 times Pi2, because they have equal number of moles and therefore power भी same होगी. Divide them with uh, PHI, because it is a reactant, therefore it is in the in the denominator, and because it has two number of moles, इसलिए यहाँ पर भी 2 आएगा, यानी स्क्वायर आ जाएगा. So Kp is equal to x times x over 28x square. So when you will multiply, you will get x square is equal to 28 square, x square, so x square will cancel out, and you will have Kp equal to 1 over 28 square. Since, okay, A or B can be the right answer, I think A is the right answer. Can you check it out? What is 1 over So A 28 is the square? answer. A is the right answer. Okay, so A is the right answer. And then it says सर वो here. This क्वेश्चन is नंबर 8 था ऊपर एक वो ऊपर ये सर 8 नीचे है सर नीचे सॉरी 9 होगा ये 9 वाला 9 says that flask X contains 5 decimeter cube of helium at 12 kilopascal pressure. And total pressure जो है ना वो 12 kilopascal है. ठीक है Flask Y contains 10 decimeter cube of neon at 6 kilopascal pressure. If flasks are connected at constant temperature, what is the final pressure? Okay, so total volume is going to be, total volume हो जाएगा 15. ठीक है, so I would say that 15 पर टोटल कितना प्रेशर होगा अगर 5 पर जो प्रेशर है ना वो 12 है. तो नहीं, इस तरह से नहीं हो सकता. सर रेशियो मेथड से आंसर तो मेरा सही नहीं आ रहा था नहीं नहीं, ट्राई किया था बिकॉज रेशियो मेथड वाले पे बिकॉज 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 इनिशियली सेम नहीं है, इनिशियली रेशियो सेम नहीं है, सो देयरफॉर class S contains 5 decimeter cube. So because he says temperature remains constant, so let's use this formula: P1 V1 is equal to P2 V2. P P1 के लिए कोई भी वैल्यू ले लो, either x or y. So I'm taking x. So 5 times 12 is equal to, I need to find out pressure too, and volume is total now when you're connecting x and y. So it is going to be 15. So this is 60 is P2 over 15. So P2 is going to be 4. So P4 is
P2 is equal to 4 kilopascal, but we have no option like that. आंसर इसका सर ए है करेक्ट. हम्म. अच्छा ठीक है, आई एम टेलिंग यू. अब ये देखो कि जो आपके पास है, जैसे ये मैंने x को किया और ये न्यू फ्लास्क है, उसको मैं n कह देता हूँ. अगेन y एंड न्यू फ्लास्क. सो y इज, y को आप p1 v1 कहते हैं. p1 v1 इज इक्वल टू p2 v2. So p1 over here is 6 and this is 10. p2 is not known and v2 is equal to 15. So this is 60 over 15 and this is equal to p2 and p2 is also equal to 4. 4. तो दोनों की वजह से 4 + 4 होगा, यानी कि x जो है वो न्यू क्लास में 4 किलो पास्कल और वो भी 4 तो किलो सर पास्कल है. मतलब अलग अलग वो कैशेस निकाल या के उनको एग्जैक्टली. ऐड कर देना. या श्योर. गॉट इट. Hmm. Okay, so next is that नीचे था question number 12. In question number 12, it says that a mixture of nitrogen and hydrogen at a temperature of 500 Kelvin was put into an evacuated vessel of volume 6 decimeter cube. Okay, total volume 6 decimeter cube given है. The mixture allowed to reach the equilibrium found that 7.2 moles of N2 and 12 were present in the equilibrium mixture. The value of the equilibrium constant for this is this one. What is the concentration of ammonia present? Okay, that's fine. देखो N2, ये अच्छा क्वेश्चन है. लाइक सिमिलर क्वेश्चन with more marks come in uh, paper 2 as well. Okay, you know that in order to find out Kc, what you do, you have to write down like concentration of NH3 ka square over concentration of N2 H2 and one. concentration of H2 ka cube. So value of Kc is given to us. We need to find out the concentrations of all of these values. He says that at equilibrium, volume nitrogen is 7.2 and then divided with 6, so that you can get the mole per decimeter cube. And hydrogen is 12 and divided with 6, so that you can have its concentration. And we do not know the moles, neither we know the concentration, so just write it down x over here. So 7.2 over 6 is equal to 1.2. This is 2. So just put these values into the equation. Since this value is given here, 6 times 10 to the minus 2. So 6 times 10 to the minus 2 is the Kc value. This is not known. This is x square. N2 is 1.2 times H2 is 2 cube. So therefore x square will be equal to 6 times 10 raised to the power minus 2 times 1.2 times 2 cube. So what is the answer? Uh, 1.51. Okay, 1.51. So did you take the square root as well? 1 minute sir, let me check. ये सर 0.758 आंसर आता है. क्या 0.758. 0.758 आता है आफ्टर टेकिंग जी द सर. स्क्वायर रूट और चलें आफ्टर टेकिंग स्क्वायर जैसे, रूट 0.758 बी आंसर है सर. which is approximately equal to B, yeah, 0.76 mole per decimeter cube. So choose B. तो सर आपने पहले वो उनके कंसंट्रेशन निकाल के फिर उनको इक्वेशन में डाल दिया हाँ जी, हाँ जी, ऑब्वियसली मतलब Kc का मतलब ही होता है कि आपने कॉन्सेंट्रेट. पहले कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है एंड Kp का मतलब ये होता है कि आपने पहले पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करना होता है. ठीक है. समझ आई कि नहीं बात की? समझ आ गया.
Okay, next. Next is question number 14. Here it says that an aqueous solution was prepared containing a mixture of 1 mole of AgNO3 and 1 mole of iron sulfate in 1 mole in 1 decimeter cube of water. When equilibrium was established, there was 0.44 mole of Ag in this mixture. Okay, तो ठीक है बेटा, अब उसने पूछा what is the numerical value of Kc. So what you should do is that you should divide each of them with 1, and then you will have a concentration, and then you will get the answer. समझ आएगी नहीं बात की? एक मिनट सेट करके देख रहा हूँ। ऐसे तो नहीं, एक सेकंड रुको, आप ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वेट सेकंड. You have to do it like this one. Let's say first we write down the equation. You have Ag plus, then you have Fe plus 2 here, and then you have something like Ag plus Fe3 plus. Now read this. He says initially you had 1 mole of AgNO3. AgNO3 means that वन मोल ऑफ Ag plus कहाँ से आया? Ag plus आपके पास आया AgNO3 से. It has 1 mole, and also you have 1 mole of FeSO4. So FeSO4 में Fe plus 2 is also 1 mole. He जी says that when equilibrium was established, there was 0.44 mole of Ag plus. तो अगर इसके 0.44 मोल्स रहते थे, तो इसके भी 0.44 मोल्स ही रहते होंगे. रहते हैं। लेकिन बेटा ये कैसे रह गए इतने, बाकी के किधर गए? That's mean how much has reacted. This is number of 0.44 is the number of moles that have been left. Then where is the other number of moles gone? तो अगर हम जीरो कहेंगे पॉइंट कि फाइव सिक्स reacted और at equilibrium, हाँ जी, तो हम लिखेंगे x रिएक्ट किए हैं, इसके भी x रिएक्ट किए होंगे, तो वट एवर लेफ्ट इज हियर 0.44 एंड 0.44. तो हम लिखेंगे फिर ये यहाँ पर तो शुरू में 0 0 था, फिर यहाँ पर क्या आएगा, इसके कितने फॉर्म किए हैं, हम जीरो कहेंगे पॉइंट फाइव 1 सिक्स माइनस एक्स. हाँ जी, तो हम कहेंगे 0.56 एंड 0.56. तभी तो यहाँ पर भी 0.56 आएगा, क्योंकि 0.5656 नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट किए हैं. नाउ डिवाइड देम with the volume, because total volume of water is 1. So you have same concentration as well, 0.4, 0.44, 0.56, 0.56. So now Kc value will be equal to products की concentration हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0.56 into 0.56 over reactants के number of moles भी same है, so powers भी same होंगी, so 0.44 times 0.44. So just check it out, what is the answer? सर इसका इससे पीछे तो डी है आंसर क्या है? इसका 2.89 है. सर डी फॉर डॉल B नहीं for नहीं सर ball. 2.89 तो अभी जो मैंने नो कैलकुलेशन सर की, डी फॉर यार एक सेकेंड, हमारा जो आंसर आ रहा है ना सर सी आ रहा 0.56 square over 0.44 square, so it is 1.619 था, 1.62 आता है. And what is the problem? One more of AgNO3. अच्छा, 1 minus 0.44 करें, 1 minus 0.44, है जी 0.56. तो इक्वेशन तो बैलेंस्ड ही है. um, ओके 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 ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग, बिकॉज केसी में सॉलिड नहीं आएगा, क्योंकि एजी तो सॉलिड बन रहा है ना.
आपके जी, पास। it will तो not react. हाँ, so it It will will not not be be used. part of, it will not be part of the concentration. So just cut out this part, and only Fe3 plus will be forming. So अब सही आंसर आया, 0.56 over 2.89. 0.44 square, 2.89, D is the right answer. ठीक है, गॉट समझ आ इट। गई कि नहीं? केपी में सिर्फ गैसेस को यूज करना है, सही है। हाँ, केपी में गैसेस को यूज़ करना है, और कॉन्सेंट्रेशन में लिक्विड्स एंड गैसेस को यूज़ करना है. Then it is question number 18. The equilibrium constant for the reaction is shown here: 2 moles minus 2 dm6 N2 plus VH2. What is the concentration of NH3 at equilibrium at 600 Kelvin when the equilibrium concentration of N2 and H2 are both 2 mole per decimeter cube? So Kc is given. What is the concentration of NH3 at equilibrium when the concentration of, देखो ये अब आप कर लें इसको. फॉर एग्जांपल जस्ट राइट डाउन के सी इज इक्वल टू NH3 का स्क्वायर हो गया. ठीक है ना, concentration of NH3 square divided by, you have N2 here, and H2 with a cube. So he says that Kc value is given as 2, NH3 is to be find out, this is x square, and N2 is 2, and this is 2 cube as well. I think we have done it already, but वहाँ पर जो उसका आंसर था वो पॉइंट्स में था. So 8 times 2 16 times 2 32 is equal to x square. When you will take square root, x will be equal to square root of 32 तो सी mole इज इक्वल per टू, decimeter cube. So C will be the right answer. गॉट इट। Next, it says that a reaction involves a contact process as shown in the figure. The reaction is investigated at 200 kilopascal and 700 Kelvin, and the value of equilibrium constant Kp is found to be Y. Reaction is then investigated at 1000 kilopascal and 700 Kelvin, and the value of Kp is found to be Z. Which statement comparing Y and Z is correct? So says that reaction is then with 1000 kilopascal and 700 kilograms. अच्छा देखो कि we have the gases, and then he has changed the temperature, sorry, changed the pressure, but kept uh, temperature same. अब देखें कि when you will increase, okay, temperature will only affect the value of Kc, because temperature of Kc is same, so therefore value of Y and Z will be same. You understand that or not? So KC, oh, sorry, KP is only affected by temperature. Kp is affected by temperature, so Kc भी affected by temperature. So Kc does not get affected by the pressure or anything else, but only with the temperature. तो सर ये temperature change केपी होगा तो, ये टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होगा ना, मतलब केपी की जो वैल्यू है। हाँ, Kc जो है ना, Kc और Kp जो है वो प्रेशर से हाँ जी। चेंज नहीं होते, बल्कि सिर्फ टेम्परेचर से चेंज होते हैं. Because temperature, when you will change the temperature, then equilibrium will shift from right to left or left to right. ठीक है ना. This is not going to change. Pressure is not going to affect them. गॉट इट। Okay, then he says in an experiment, B mole of hydrogen iodide were put into a sealed vessel at a pressure of P. At equilibrium, X moles of hydrogen iodide had dissociated. X moles जो है ना हाइड्रोजन आयोडाइड के वो डिसोसिएट हो गए थे. Now you see here, it's very interesting question, mathematical involvement here, a lot of mathematics. तो अब वो कैसे होएगा कि he says that you have 2Hi, and then you have H2 plus I2, so everything is a gas. So Kp का आपने लिखना है, and for that first of all we need to find out the volume, sorry, number of moles. He says here that in experiment B moles of hydrogen iodide were put. अच्छा, initially इसके पास थे B moles,
इसके थे जीरो और इसके थे जीरो। एट प्रेशर पी, पी जो था ना वो टोटल प्रेशर था। एट इक्विलिब्रियम एक्स मोल ऑफ हाइड्रोजन हैड बीन डिसोसिएटेड। तो इसके तो एक्स बी मोल्स, माइनस एक्स। हाँ इसके जो रह गए ना बाकी वो रह गए बी माइनस एक्स, और इनके एक्स ओवर टू एंड एक्स ओवर टू फॉर्म करेंगे, क्योंकि मोल रेशियो ऑफ दिस एंड मोल रेशियो ऑफ दिस इज 2 to 1, यानी कि सर इसके हम ये टू नहीं मोल। करेंगे बी माइनस एक्स ओवर टू? नहीं हम ये नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे बी माइनस एक्स। तो अगर इसको आप यहाँ पर ना लिखें तो हम यहाँ पे देखते हैं इनिशियल अमाउंट, देन वी यूज टू राइट डाउन के रिएक्टेड, आर फॉर रिएक्टेड, एक्स मोल इसके रिएक्ट कर गए। तो H2 के कितने मोल्स फॉर्म किए बाय कंपेयरिंग इट विद बैलेंस केमिकल इक्वेशन x over 2 and x over 2 is for I2 because HI और H2 की जो रेशियो है वो 1:1 है। अब हम कहेंगे कि हाउ मेनी आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। तो b minus x is present at equilibrium x over 2 minus 0, x minus 2 over 0, इनके इतने ही पड़े हैं बाकी। And the total pressure was P. So partial pressure of each of these, like if I will write down now the partial pressure. अच्छा सबसे पहले तो मोल रेशियो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले मोल रेशियो आपको पता होनी चाहिए। So here n ratio mean mole ratio. Mole ratio is equal to number of moles of that particular gas over total number of moles multiplied by, अच्छा बस ये वाले पहले फाइंड कर लें। तो total number of moles are b minus x plus तो x over 2 टोटल है plus बी x over माइनस 2, एक्स प्लस एक्स so it ओवर will be टू b प्लस minus plus x। तो b आपके पास total number of moles है, तो mole ratio is b minus x over 2, b minus x over b and x over 2b, यहाँ पर भी x over 2b, यानी x over 2 को भी b से डिवाइड कर दिया, दूसरे x over 2 को भी b से डिवाइड कर दिया, we get x over 2b. This is mole ratio. Now we can find out that what is the partial pressure. PP लिखते हैं partial pressure. So partial pressure is always like mole ratio multiplied by total pressure. Mole ratio multiplied by total pressure. Then mole ratio multiplied by total pressure. So Kp over here it is equal to products, the concentration, product of अच्छा इतने क्यों नहीं हाँ जी हेलो। जी सर हेलो। अच्छा, now we have to find out. Now partial pressure of H2 was x over x over 2b into p, x over 2b into p, and partial pressure of I2 is x over 2b into p divided by partial pressure of HI, which is x over no, it is b minus x over b minus x over b into p, इसका होल्स का स्क्वायर हो गया। अब आप देखें थोड़ा सा, क्या so चीज? it will be like देखो x and x will multiply, it will become x square, p and p will multiply, it will get p square, then divided by 2b and 2b फोर बी will स्क्वायर। multiply, so it will get 2 4b square divided by, यहाँ से करेंगे तो we will have b minus x का स्क्वायर multiply by p square over b square as well. एंड नाउ यानी ये वाली चीज़ को मैंने ओपन करके यहाँ पे लिख दिया है। अच्छा अब आप इसको कर लें एक्स स्क्वायर टाइम्स पी स्क्वायर ओवर 4b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर बी ओवर स्क्वायर। b minus x whole square times p square. So you see that p square b square b square b square से cancel out हो गया. Now you have what? You have here
x square over 4 into b minus x का square. So is there anything like that? Yes, 4 sir. वाली तो एक ही 4 वाली एक ही चीज़ है and that is c. नहीं 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 सॉरी D वो सर d आंसर भी है. है. हाँ d भी है. Exactly. So D is the right answer. You understand or गॉट not? इट. अंडरस्टैंड. ठीक है. सर जब लेकिन आप देख पेपर में इतना टाइम होगा हमारे पास? इसको देखो प्रैक्टिस से होता है. अब मैंने तो आपको मैथ्स समझाना था इसलिए फिर हर एक स्टेप हाँ. किया. अदरवाइज अब टेक्निक्स होती हैं कुछ. देखें फॉर एग्जांपल लेट्स से यू हैव हियर ए plus b it is forming c plus dd. Let's say this is a general equation and you want to find out kp. Initially you need to know that you have x number of moles इसके हैं और y number of moles इसके हैं. तो इनके कितने होंगे 0 and 0. In examiner there is a hint given which is a limiting reagent or a and b will be equal. अब आप जैसे आप देखते आ रहे हैं सारे क्वेश्चंस में क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑलमोस्ट दे आर सेम एवरीवेयर. तो लेट्स से a इज इक्वल टू बी. a इज इक्वल टू बी तो दोनों साइड्स पे वो चीज़ है. So next we write down that how many moles have reacted so far. तो हम लिखेंगे कि लेट्स से कि जो आपके पास A है उसके मोल्स जो रिएक्ट किए थे वो किए थे n नंबर ऑफ मोल्स हैव बीन रिएक्टेड. अगर अगर A के n किए हैं बिकॉज A एंड B बोथ हैव सेम नंबर ऑफ मोल्स तो इनके भी n मोल्स रिएक्ट किए हैं. तो अब अगेन इट डिपेंड्स के आपके पास मैं कोई रियल वैल्यू से ले लेता हूँ यहाँ पे. हाँ जैसे यहाँ पे मैं लेता हूँ 2. ओ सॉरी. जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि 2 है और यहाँ पे ले लेता हूँ 2 है. सी का 1 है और इसका लिख लेता हूँ 4 है. सो अगर ए के एन नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट किए हैं बी के एन नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट किए हैं तो सी के एन ओवर 2 मोल्स फॉर्म करेंगे बिकॉज बिकॉज ऑफ मोल रेशियो. And if B has यानी A has 2 moles, D has a double mole as compared to A. So इसके 2n moles form करेंगे. Now you find out total number of moles. So total number of moles are n plus 2n plus n over 2. So 4n, 6n. This is 6n. No, n plus n 2n 4n. 8n 9n over 2. So this is going to be 9n over 2. गॉट इट. So this is 9. So total number of moles are 9n over 2. So now if you will find out number of moles at equilibrium. No, this is not fine actually. Uh, Equilibrium पे total number of moles find out करने होते हैं. So at equilibrium you have number of moles as x minus n, y minus n by 2 minus 0. It is n over 2. 2n minus 0 is 2n. So now you find out total number of moles. So total number of moles are now we will find it out at a side. So total number of moles are x minus n plus y minus n plus n over 2 plus 2n. Let's say this total number of mole is equal to m. M is the total number of moles. So how will you find out the partial pressure of each gas? So partial pressure of each gas will be equal to what? It will be number of moles at equilibrium over total number of moles. This is called as mole ratio. Okay, by the way, what is partial pressure? Let me tell you. So partial pressure is equal to mole ratio times total pressure of the system. And let's say this total pressure of the system is like you can say H. Capital H वाली value ले लेते हैं. This is total pressure of the system. So we will multiply this with capital H here. Same goes for B. B has a partial pressure of Y minus N over total number of moles multiplied by total pressure.
So number of moles over total number of moles multiplied by H. Number of moles over total number of moles multiplied by H. So this is like mole ratio into total pressure will give you the partial pressure. Now let's say what is the Kp value now? So Kp will be like C की वजह से जो है वो है n over 2m into h. There is no power on it, like there is power of 1, and for h it is 2n over m into h, and it has a power of 4 because its coefficient was 4. For a it is x minus n over m. This is the partial pressure. Its power of 2 times it will be y minus n over m. Y minus n over m will be a definite value. तो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें सिर्फ ये पिछला क्वेश्चन आया था जिसमें डेफिनेट वैल्यू नहीं है, तो वो बी उसने लिखा हुआ था उसको. तो दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड आउट. अब इसका यूनिट्स क्या होंगे? यूनिट्स होंगे जैसे एच की पावर 1 है, सो इट इज पास्कल. देन बी, यानी ए की पावर 1 थी, नो नो नो, सी की पावर 1 थी तो इट्स जस्ट पास्कल. डी की पावर 4 है, सो इट इज पास्कल रेज़ द पावर ऑफ 4. एंड ए की पावर 2 है, सो दिस इज पास्कल स्क्वायर. बी की पावर 2 है, so this is Pascal square. So this Pascal square become total 4. It will cancel out with this one. So partial pressure, sorry, units of Kp over here, it will also be Pascals. Is it clear or not? It's clear now. So we have to take into account for such values. Similarly, we have to do with, like, let's say I have to find out Kc. What will do? It's very much easier. We'll take all these calculations like we have done over here. ये हम Kc अगर फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे वो आपको बताने जा रहा हूँ. We perform similar calculations, number of moles initially reacted at equilibrium. We get all that data. तो अब हम लास्ट पे जाके हम कर लेंगे concentration find out. And how do we find out the concentration? By dividing number of moles given. Like we should have a let's say total number of moles over here is equal to x minus n plus y minus n plus n over 2 plus 2n. Let's say this is also equal to m. So now um, concentration will be equal to mole ratio, which is x minus n over m into total volume. Let's say the volume of the container in which liquid is present, it is v. अब v 10 भी हो सकता है, 20, 30, it can be any value. So concentration is equal to mole ratio over volume. So y minus n over m, that is the mole ratio over volume, n over 2m over volume, 2n over m over volume. And then let's say these are the values like small p, q, r, and s. So these are the answers. So Kc will be equal to concentration of r, concentration of C, which is r, concentration of D, which is S, which is the power of 4. For A, it is P square, and for B, it is Q, and this is square. और इसकी फिर concentration के units भी हम find out करेंगे तो they will come out to be mole per decimeter cube. Is it clear or not? It's clear now, sir. अच्छा जी, अब उसने हमें यहाँ पर कहा है कि
ईच इक्विलिब्रियम पोजीशन लाइज वेल टू द लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब है प्रोडक्ट्स आपके पास ज़्यादा हैं, तो प्रोडक्ट ज़्यादा हैं दोनों केसेस में। के सी इज इक्वल टू 1 एंड के सी इज इक्वल टू 2। एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट position of equilibrium is to the right, kc is equal to k3। तो आप एक चीज़ देखो कि के सी वेयर के वन एंड के टू रिएक्टेंट साइड पर लिक्विड्स है ही नहीं, दीज आर सॉलिड्स, तो इनका डिनोमिनेटर तो होगा ही नहीं, सो के वन के टू विल बी लार्जर वैल्यूज। अच्छा, सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो ज़्यादा डिजॉल्व होता है इन एक्वस अमोनिया। सिल्वर आयोडाइड विल नॉट डिजॉल्व इन एक्वस अमोनिया। तो इसका मतलब है के वन इज ग्रेटर देन के थ्री, sorry, k1 is greater than k2. He says silver iodide will not dissolve in aqueous ammonia. Silver chloride will dissolve in aqueous ammonia. Okay. He says position of equilibrium lies to the right. ओह सॉरी, पहले वाले में उसने कहा था पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज टुवर्ड्स द लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब है कि रिएक्टेंट से ज़्यादा है, प्रोडक्ट्स बहुत कम है, तो के वन इज़ लेसर, के टू इज़ स्मॉलर। लेकिन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन द नेक्स्ट वन, उसमें ज़्यादा है के थ्री। तो लेकिन उसमें आप देखेंगे सिल्वर आयोडाइड तो बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होगा। तो इसका मीनिंग ये है कि वो आयंस फॉर्म ही नहीं करेगा। सो हियर ऑल आयंस विल बी फॉर्म्ड ड्यू टू सिल्वर क्लोराइड। इसका क्या आंसर आता है? सी नहीं आता क्या? नहीं सर, जो मैंने सर्कल किया वो आंसर है। चेक। अच्छा, सी सेज दैट K3 is smallest one, K1 is larger, K2 is even larger. अच्छा, ऐसा है कि यू नो दैट आयोडाइड्स जो होते हैं दे आर स्ट्रॉन्गर reducing agents, and their bonds are not very much stronger, so therefore they get ionized quickly as compared to chlorine. तो iodide के जो ions होंगे they will be more, so therefore you will say K2 is the largest one and K1 is the larger than K2. K3 will be the smallest because of the reason के उसने हमें बताया भी है शुरू में कि सिल्वर आयोडाइड तो completely dissolve, मतलब 100% डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है ना, इट रिमेन्स एज इट इज। सो दैट्स वाई के थ्री इज वेरी वेरी स्मॉलर वैल्यू। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। अब अभी देखो, इसको आप ट्राई करना वो केसी का एक्सप्रेशन वगैरह लिख के। जी जी। पहले आप इसको डिवाइड करें, पहले आप देखें, पहले आपने लिखना है कि इनिशियल अमाउंट ऑफ इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कितना है, फिर रिएक्ट कितने किए हैं, फिर इक्विलिब्रियम में रह कितने गए हैं, देन फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ओवर concentration। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम टू फाइंड आउट द concentration। ओहो, अच्छा, इसमें आपने ये वाला स्टेप नहीं करना। किधर गया? ये वाला जो था जिसमें आपने के सी फाइंड आउट करना है, so there is no need to do this step। ये वाला नहीं करना आपने, ठीक है, सारे का सारा। इसमें मोल जी रेशियो नहीं फाइंड आउट करनी। हाँ, इसको सीधा सीधा नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करके, तो वो आपके पास कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम। एंड इन क्वेश्चन नंबर 47 ही सेज दैट, अब इसमें भी देखो, मेरे ख्याल वैसे भी रिपीट हो रहा है क्वेश्चन।
इसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं सर, ये आता है, ये आता है। मैंने वैसे सदर किया था कि एक बार हाँ, ये प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स हो गया, ठीक है। X and Y react together to form Z in a reversible reaction. Equilibrium yield of Z is lower at higher temperature. इसका मतलब है कि this is an exothermic reaction. It does not support high temperature, so it is an exothermic reaction. So either A or C can be the right answer. And then he says that equilibrium yield of Z is lower at a lower pressure. So its mean amount, its mean number of moles on the product side are lesser, because low pressure पे like it is yield is directly proportional to pressure. तो जब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे, सॉरी प्रेशर ज़्यादा होगा, तो जी ज़्यादा होगा। तो वो कब ज़्यादा होगा? वो तभी ज़्यादा होगा ना जब आपके पास in equilibrium reaction if number of moles जी। of G are less and on the other side if pressure will be increased, then equilibrium will shift towards G. So that is why we say that इसका जो ऑप्शन होगा वो ए वाला ही होगा। इट शुड हैव लेस नंबर ऑफ मोल्स, ताकि जब प्रेशर को इंक्रीज करें तो जी भी इंक्रीज हो जाए। यू अंडरस्टैंड नाउ? यस सर, गॉट। क्या समझ आई आपको 52 में? सर 52 में बेसिकली हमने अभी रिवर्सिबल रिएक्शन है तो हमने ये देखना है कि टेम्परेचर क्या है। प्रेशर का तो इफेक्ट होता नहीं है केसी या केपी की वैल्यू पे, तो उसकी इक्विलिब्रियम यील्ड अगर हाई प्रेशर पे लो है तो उसका मतलब यही है कि उसका जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है, तो बैकवर्ड रिएक्शन फिर उसका एंडोथर्मिक होगा। और हमें इतना पता लग गया कि फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है क्योंकि ओवरऑल यील्ड डिक्रीज होती है जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करो किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। हम्म। अगर यील्ड इंक्रीज होती है तो फिर सी होता। जी नहीं, देखो प्रेशर इंक्रीज करने से यील्ड इंक्रीज होएगी और प्रेशर डिक्रीज करने से यील्ड डिक्रीज होएगी। लेकिन वो डिपेंड करता है ना कि दोनों साइड से मोल किस में ज्यादा है किस में हाँ, कम है, और हाँ जी, अगर गैसीय स्टेट में है या नहीं। हाँ जी। सेम गोज फॉर दिस। इसको अब ट्राई करना आप। अब यहाँ व्हाट हैपेंस व्हेन प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज्ड? तो ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज, definitely molecules will come closer to each other, and equilibrium will shift towards the react towards the product reactant side, because on the reactant side the number of moles of gases are less, ठीक है। So because the reactants are on the left hand side, so therefore C is the right answer. नहीं, rate of reaction will decrease. How will it decrease? What happens when pressure of the system is increased? अच्छा, वो इस तरह से, वेट सेकंड, बिकॉज बिकॉज when you will increase the pressure, equilibrium will shift towards the reactant side. तो जो आपके पास नंबर ऑफ ओवरऑल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस है वो कम हो जाएंगे, बिकॉज जो आपके पास SO2 एंड ऑक्सीजन है, इसके 3 मोल्स हैं, इनमें से बाकी 2 मोल्स बच जाएंगे जो कि SO3 है। सो ओवरऑल देयर इज ए डिक्रीज इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मोल्स और particles which जी, will be colliding with each other. So that's why their rate of reaction will decrease and equilibrium will shift towards the left hand side. गॉट इट। Understand or not? हाँ, वैसे अंडरस्टैंड। सी मतलब यूजुअली सी सही। वाला ऑप्शन सही सही लगता है, लेकिन अगर आप सोचें तो ओवरऑल when pressure will increase and number of moles of SO2 will get decreased and number of moles of O2 will get decreased, because number of moles of SO3 will increase.
So overall amount of particles will decrease. गॉड सर अभी मैंने वो खाना लेने जाना है बाय से, तो लेट हो रहा है सुबह को। अच्छा चलें, ठीक है। ओके ओके, विल कंटिन्यू। ओके ठीक, थैंक यू सर। जी, अल्लाह हाफिज़।